Yeah, students, the question which I had put forward was, I've given you a uniform wooden plank. Students, a wooden plank hai, okay? And these are the two ends, okay? And this wooden plank is connected by uh, tackles or strings or ropes or chains we consider. Okay, supported symmetrically by two light identical cables, each sustaining a tension of how much? 500 newtons. There is a tension acting in each of them, and that is 500 newton. So when I came on Mira Road, students, when I came on day before yesterday or yesterday, day before yesterday, I had come. It was Himut's lectures going on, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, we stayed there to meet you, but you had already left. Because the 12th had already done with it. I was with the 12th standard students, and they done with it in that case. Okay, great. Sir, you took two-time glance in our classroom. What happened? What happened? Sir, you took two-time glance in our classroom, but you didn't give Yeah, me because insight. I saw Sanjana was sitting at the first, and then I saw again Kevala and I was quite happy to see the entire class. And later on, Hemant sir posted in our group also, in teachers group, the olden days are back. He must have clicked a photograph of all of you. It seems like that. Yes, sir. Yes, He sir. clicked. He Yes, sir. is. Not only one, three, four photos. Okay, so he clicked it and he posted in our group where it was all teachers are there. And I was happy to see the entire class in that. मतलब क्या बात है, मतलब सारे students are there into it. So that is, he says the olden days are back. That's good. From situation of online to coming to offline. Okay. Now please, So yeah, bolo. there is one problem, like we are starting here online again. So we are like confused in which book we are supposed to write this down now. No, I didn't get you. Which book we are supposed to? Write it down. Like now we have to make two separate books again. Hmm. So like you were continuing that this and then HP sir started again. So we have to continue in that previous one only. No, no. One thing, you continue in that previous one itself only, or ये जो part है ना, let me see one thing. For a particular subject, are you using one book or you are trying to write down two matters in a single book? How you are No, doing it? no. One teacher, one book. Okay. So one thing you do like that, rotational ka, you continue, you're continuing with Hemant sir, and those people are continuing with Som sir, you can continue from there onwards. पीछे से तुम शुरू करो. I get it. You start from behind. The last page से शुरू करो. Same book. Are you getting it, students? Yes. Yes, sir. Okay, sir. तुम reverse जाओ उसके लिए. You reverse जाओ, and when you want to connect it, you can connect it easily. Hope you are getting all the students in the group to maintain the book. Clear हुआ, students? सर ये वाला चैप्टर आईआईटी आई मीन जेई के लिए अलग पढ़ना है और नीट के लिए अलग पढ़ना है क्या? क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों पार्थिव? Why you are saying like that? सर बिकॉज आपने अलग तरीके से स्टार्ट करवाया था और अभी सर ने अलग तरीके से स्टार्ट करवाया तो हाँ, और सर ने क्या बोला था? What exactly sir said it? सर डिडंट से एनीथिंग. अरे So तुम बोला she ना mean to sir say that you started with the concept of torque, and in our classes they started with the moment of inertia. या So करेक्ट. okay. And that is fine enough with it. That is fine enough because the reason is why, because it is torque is a concept which you are aware about it. Since torque is a concept which you all are aware about it in that case. And that is what he will try to pick up that matter when it comes into numericals. जैसे वो concept numerical में आएंगे तो सर वहां पे वो torque का concept he'll try to throw over there itself only, and he'll pick it up from there and then further he'll add on to it. It's like that sir is trying to do it. So it's all going equivalent. It's not like that it's not going equivalent. It's all going equivalent. Because today I wanted to do some more problems onto torque in that case, and then I would have been starting with moment of inertia. And Okay. did sir has completed moment of inertia fully?
No, sir. Okay. Has he started with any of the theorems, perpendicular and parallel axis theorem? Yes, sir. Yes, Both sir, are done. both done. Achha, both the theorems have been completed. Yes, Yes, sir. sir. So we did till the first theorem, parallel axis. Okay. That means moment of inertia concept complete हो गया ना? तभी जाके तो theorems you all have picked up in that case. So now sir is Sir- going to go. हाँ बोलो. So we haven't taken the rectangular lamina ka moment of inertia and triangle plates ka. We just took See one thing, ये जो है ना moment of inertia for certain solid symmetrical objects के लिए, the answers in students, all of you all. A few of them you need to know further, means you need to know the concept के how to go about with the derivation. The entire derivation is not needed for it. Lekin there are lots of mathematical formula on moment of inertia of several solid symmetrical objects, starting from thin uniform rod to a ring to a circular plate, that is a disk we consider, to a solid cylinder along horizontal axis, vertical axis, square lamina, rectangular lamina, a hollow cone, a solid cone, a hollow sphere, a solid sphere. ये सारों का मैथमेटिकल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. सारों में एक्सिस पास होगा सेंटर ऑफ मास से, सारों का सेंटर ऑफ मास से पास होगा. तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट क्या है वो, दैट इज व्हाट सर हैज थ्रोन अक्रॉस टू यू ऑल, एंड ही हैज पिक्ड अप अ फ्यू डेरिवेशन कि उसको डिराइव करना तो कैसे करना है. Now, before going, let me put forward a simple answer onto this. Answers, students. अगर suppose I'm not going to explain the entire because sir is doing that. I don't want to enter into that. But I'll tell you what exactly sir is working out with you all. अगर suppose मैंने cylinder दे दिया, students देखो, अगर suppose मैंने एक cylinder दे दिया, for example ये पेन ही ले लिया मैंने, okay, cylinder है और ये एक solid lamina है, uniform solid symmetrical object दिया हुआ है students, agreed, जिसका length L है और जिसका रेडियस R है. अभी सपोज मुझे ये रॉड को रोटेट कराना है तो मैं क्या करूंगा, तो तुम बोलोगे सर एक्सिस को आप सेंटर ऑफ मास से पास करोगे और देन द रॉड इज सेट टू रोटेट अबाउट दिस. तो ये हुआ मेरा लेंथ L और ये हुआ मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हुआ मेरा सेंटर ऑफ मास, एंड आई एम मेकिंग द entire cylinder to rotate about the center of mass. Look at the statement which you heard the statement what I'm saying it. I'm making the solid rod, uniform solid rod to rotate about an axis, passing through center of mass of the cylinder, passing through center of mass of the cylinder and perpendicular to its length. Students, whenever sir is speaking out these statements, listen to him very carefully कि ये axis कहाँ से जा रहा है. You will be able to connect the things more easily. तो ये तुम्हारा rotational axis हो गया तुम्हारा, and it's passing through the center of mass. मुझे चाहिए moment of inertia about this. अगर मुझे ये चाहिए तो इसका आंसर तुम्हें students, if in case if I consider I is equal to what, let us say the entire mass of the rod is m, so it's ml square by 12 plus mr square by 4. Students, ये इसका आंसर है और ये तुम derive कर सकते हो. सर ने वो डेरिवेशन पकड़ा है. अभी डेरिवेशन, हर एक जो डेरिवेशन होगा स्टूडेंट्स, हाउ एग्जैक्टली सर मस्ट हैव पिक्ड इट अप, क्योंकि ये रिजिड लैमिना है, इट्स अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. स्टूडेंट्स, एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिया हुआ है. तो उन्होंने किया क्या, अगर इसको समझना है तुम क्या करो स्टूडेंट्स, हैव यू सीन 5 रुपीस कॉइन. हाँ स्टूडेंट्स, तो अगर तुम 5 रुपी कॉइन लेते हो तो एक 5 रुपी कॉइन तुमने कहाँ पे रखा है स्टूडेंट्स, यू हैव केप्ट द 5 रुपी कॉइन समवेयर फ्रॉम हियर एट द सेंटर, है ना. और वो 5 रुपी कॉइन के आसपास में दूसरा कॉइन बैठाओ, तीसरा वाला कॉइन बैठाओ, चौथा वाला कॉइन बैठाओ, पांचवा वाला. ट्राई टू प्लेस all these particular 5 rupee coin one after another. Don't you think so all these 5 rupee coin are of uniform thickness? Yes, है ना, they are all uniform, the radius of all the coins is exactly same, the thickness is same, and that is how you're going to, अगर ये suppose if I take 5 coins on the right hand side, 5 coins on the left hand side, keep them intact, don't you think so I'm getting a cylinder? Students, am I getting a cylinder? Yes. तो सिलेंडर को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम सर्कुलर डिस्क को यूज करेंगे. यानी जब भी अगर सर इसके बारे में बोलेंगे तो ही विल से टेक अ सर्कुलर डिस्क एंड स्टार्ट अलाइनिंग द सर्कुलर डिस्क फ्रॉम द सेंटर, जहां पे तुम्हारा लोअर लिमिट ये हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, प्लस आर. ये x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल प्लस आर हो जाएगा. लेकिन तुम्हें यहाँ पे भी तो अलाइन करना है ना,
तो x इज इक्वल टू 0, ये किस तरफ गया? माइनस। माइनस हो जाएगा। तो आगे तुम्हारे लिमिट्स माइनस r टू प्लस r, एग्जैक्टली लाइक अ रॉड। ये थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए भी तुमने क्या किया था स्टूडेंट्स? सर ने जब भी ml²/12 जब भी डिराइव किया होगा, तो तभी भी सर ने क्या लिया होगा? -l/2 यहाँ पे लिया होगा, +l/2 लिया था कि नहीं लिया था सेंटर से? यस सर। Yes, sir. और लिमिट लेते हुए इंटीग्रेशन करके किया था। So whenever he's trying to do these kind of students, ये जो derivations are not been asked. We are solving matter, but you need to know how to go about it. And it's not that is also in NEET. Those things are also in NEET part of it. Okay. यस सर। सर आपने यहाँ पे mr²/4 किसका लिया है? डिस्क का लिया है। डिस्क का मैंने कहाँ से लिया है? बता सकते हो? डिस्क तो तुम ड्रॉ करोगे पार्थवी, डिस्क तुम यस ड्रॉ सर। करोगे, डिस्क ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा ना डिस्क। ये 5 रुपए का कॉइन डिस्क ऐसा है ना? हाँ, यस सर। ये इसका एक्सिस है। हाँ, यस सर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/2 होगा, शायद तुमने पढ़ा होगा। यस यस। लेकिन ये डिस्क मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है, वर्टिकल रखा है। वर्टिकल। सी आई प्लेस इन दिस मैनर, ऐसा रखा है ना मैंने डिस्क को, देखो। यस। यानी मेरे हाथ में ये है एक्सिस, ये एक्सिस का आंसर मेरे हाथ में है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कौन सा एक्सिस चाहिए? मुझे कौन सा एक्सिस चाहिए? सर हमें वाई वाई हाँ एक्सिस। हाँ, यानी यानी आई वांट टू गो फॉर दिस पार्ट ऑफ इट, ये वाला एक्सिस चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। और सर ने अभी तक परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ाया नहीं है ना, नो सर। इसलिए उन्होंने ये डेरिवेशन हाथ में नहीं लिया। आई गेटिंग इट? ओके सर। यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें पैरेलल एक्सिस के कंसेप्ट आते हैं, वहां पे सर ने अभी जब भी परपेंडिकुलर करेंगे, शायद यहाँ पे भी जाएंगे सर। अभी फॉर एग्जांपल मुझे स्फीयर के बारे में बताना है स्टूडेंट्स। अगर मुझे स्फीयर दिखाना है तो मैं स्फीयर अगर सपोज मैंने बोला कि एक स्फीयर सॉलिड ज्योमेट्रिकल स्फीयर करना है, तो स्टूडेंट्स हाउ डू यू मेक इट? तुम्हारे पास में अगर कुछ कॉइन्स हो ना, तो ऐसे उठाना स्टूडेंट्स, 2 कॉइन लेना, 2 रुपए के, 2 रुपीज के 2 कॉइन लेना, गेट। फिर 1 1 रुपए के कॉइन लेना। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, 2 रुपए के कॉइन, फिर 1 रुपए के कॉइन, एग्रीड। फिर 50 पैसे के कॉइन, फिर 25 पैसे के कॉइन। और ये सारे कॉइन्स को ऐसा एनरोल करो, एक तुम्हें स्फीयर मिलेगा। तो समझ में आ रहा है? अगर सर तुम बट सर ने तो हमें स्फेरिकल शेल लेने के लिए बोला था, आपने यहाँ पे डिस्क ले रहे हो ना? हाँ, मैं यहाँ पे डिस्क ले रहा हूँ, वो हॉलो था, वो हॉलो स्फीयर के लिए बोला होगा सर। नहीं सर, सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए क्या बोला था सर ने? टू टेक अ थिन स्फेरिकल शेल। हम्म, and then he picked up a ring inside it. या। Okay, that is also fine then. Spherical shell liya to ring. What is the answer? He got it over here. 2/3 mr square. He got it. या यस सर। I'm asking you again. Was it 2/3 mr square? यस सर। Sure, Pathway. श्योर सर। So that is for hollow sphere. नो सर फॉर ओके वेट। Was it 2/3 mr square was the answer, or 2/5 mr square was the answer? 2/5 सॉरी 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 सॉरी। Once again, I'm asking you. या 2/5। हाँ, तो तुम्हें रिंग के हिसाब से लिया सर, वो रिंग्स लिए फिर सर ने। Okay, one can take the disk and one can go for the rings also. Hollow के लिए होगा 2/3 mr square, और for a solid sphere will be 2/5 mr square. Agreed? यस सर। Okay. Now please pay attention. This was a question which I had put forward across in the last lecture, students. That a rod was placed horizontal, students, and there were tensions were acting onto it at the two ends of a rod, students, or a wooden plank. Okay, and a man was standing at the center of it. Okay, after tying the cables exactly vertical, are separated by 2 meters. The distance between them is given to us 2 meters, students. ये पूरा 2 meter है. Okay, a boy of mass 50 kilograms standing at the center of the plank is interested in walking on the plank. Okay, so a boy of how much mass? 50 kilograms is standing at the center of the plank. Standing at the center of the plank is interested in walking on the plank.
how far can he walk? How far can he walk? Suppose if he walks over here and he's over here now. So how far does he walk? This was a question asked. In order to keep the entire system in equilibrium, students, your gravitational acceleration should be 10 meters second square inverse. Students, is it clear to you? The question is clear? Yes, sir. Again, I repeat, students, a uniform wooden plank of, plank ka mass mere diya. Students, the mass of the man is this, okay? And mass of the plank, small m. A uniform wooden plank of mass 3 kilograms. Okay, that is given to you. So plank ka mass is 3 kilograms and the mass of the man is 50 kilograms. Students, is supported symmetrically by The two. mass of plank you gave 30 kgs. Oh, very sorry, 30 kg. Yes, 30 kg. Okay, 30 kilograms is supported symmetrically by two light identical cable, students, and the tensions in each of them is 500 newtons. After tying, the cables are exactly vertical and are separated by 2 meters distance between them, students. A boy of mass 50 kilograms standing at the center of the plank is interested in walking on the plank. How far can he walk to still see to it that the plank is in equilibrium? Yes. Is anybody? Students, listen carefully. What exactly the concept over here will be, students? When you look into such kind of questions, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें beam को horizontal बताना है. Are you getting it? यानी तुम्हारा एक turning point तुम्हें select करना है. A student can select A as a turning point or B as a turning point. Now, suppose if I say a man walks at a distance X from the center, यानी ये distance कितना हुआ? हमारा ये distance 1 meter है. तो ये distance कितना होगा? 1 plus X. Let us say that the entire system is set to rotate about point A, if I happen to consider. Okay, taking moment about point A, students. So, अगर मैंने पूछा moment about point A, if I happen to consider in this case, please pay attention. Moment about point A. If I consider, that means for the answer, suna students, for plank to be in static equilibrium, algebraic sum of total moment of force about point A, can I say should be equal to 0? Students, क्या ये clear है सबको? हाँ Yes, students, sir. ये concept clear है? यानी अगर मैंने पूछा for equilibrium to maintain the summation of total moment of force about that point should be equal to 0. So net torque about that point will be equal to 0. So now let us say about the moment of force about this particular point we consider. यानी अगर मैं ये point A लेता हूँ, students ध्यान से सुना, अगर मैंने point A लिया है, तो मुझे बताओ A के हिसाब से कौन से forces तुम्हें दिखाई दे रहा है? तुम बोलोगे सर ये जो 50 kg है वो इस तरफ जा रहा है ना? ये perpendicular distance हो गया.
यानी यहाँ पे अज्यूम करो ना कि तुम्हारा नाइफ एज यहाँ पे है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाइफ एज यहाँ पे है, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो ये कौन से डायरेक्शन में लेके जा रहा है? सर ये क्लॉकवाइज जा रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 50 over here will be? What is the distance over 1 here? meter. It's 1 we consider. Agreed? Yes, sir. But now is the man over here? No, the man is not over here. The man is over here at a distance of how much? 1 plus x. 1 plus x. Are you getting it? ध्यान से सुनना, यानी अभी हम मैन को यहाँ पे रख रहे हैं, इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमें निकालना है ना, तो हम मैन को यहाँ पे ले ही नहीं सकते, हमें मैन को यहाँ पे लेना है स्टूडेंट्स। Agreed? He has walked a distance x. So can I say no? This is 50 kilogram. ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है सर? ये भी तो क्लॉकवाइज जा रहा है। ये कौन सा फोर्स हो जाएगा सर? ये तो फोर्स एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे है, तो ये किसका होगा सर? ये प्लैंक का मास होगा। व्हाट इज द मास ऑफ द प्लैंक? 30 k. grams. उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए क्या है? 1 1 मीटर। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? clockwise. Clockwise. तो अगर मैंने बोला, ध्यान से सुनो एवरीबॉडी प्लीज, इफ आई से algebraic sum of total moment of force about point A is equal to 0, that means torque in clockwise direction should be Is equal to equal to torque in anti-clockwise. this direction, or if I happen to add them up, summation should be equal to 0, है ना? Clockwise directions we consider always in what? Negative होंगे। अगर मैंने इसको ऐड कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस आर ऑलवेज इन पॉजिटिव। समेशन अगर मैं दोनों लेता हूँ विल बी इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल रिलेशन होगा फॉर दिस पार्ट। तो सिर्फ तुम्हें वही लिखना है, बस अभी एक इक्वेशन फॉर्म करना है। अभी देखो क्लॉकवाइज, क्या ये क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है? हाँ स्टूडेंट्स, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. ये भी कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. तो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स पॉजिटिव में होंगे या नेगेटिव में होंगे? Negative. तो इसको तुम Negative. कैसे लिखोगे? इसको तुम कैसे लिखोगे? ध्यान से सुना, नाम पुटिंग द वैल्यू स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा सर? 30 is a mass, gravitational acceleration is 10, mass into acceleration to gravity will be force, है ना? तो 1 force into perpendicular distance, तो can I say minus 300 Into 1. into 1 plus, agreed? ये क्या होगा? Minus 500 into 1 plus x. Yeah, absolutely correct. Minus 500 in bracket 1 plus x. ये कौन सा मूवमेंट हुआ? ये पूरा कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। Clockwise. प्लस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कौन सा होगा? मुझे बता सकते हो? So tension of B. 500 यानी into 2. हाँ, यानी देखो ये एंड देखो, ये एंड इज एट पॉइंट बी. Is there any force trying to make the plank to move upwards? Yes, this point, this force. ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? Is it going in clockwise or it's going in anti-clockwise? Anti-clockwise. अगर सपोज, प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ये सोचो कि ये दोनों मास मैंने लिया ही नहीं सर, इसको भूल जाओ, ये फोर्सेस को भूल जाओ, है ना? टर्निंग पॉइंट यही है मेरा। हेलो, टर्निंग पॉइंट यही है, इनको देखो ही मत अभी। और यहाँ पे देखो कि तुमने ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है थ्रेड और तुम उसको ऊपर उठा रहे हो, तो कैन यू टेल मी हाउ इज इट टर्निंग इफेक्ट? इज इट क्लॉकवाइज और इज इट एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा सर? ये तो टेंशन है, सो इट्स 1 फोर्स into perpendicular distance. And what is the perpendicular distance from here till here? Is it 2 1 meter? meters. Is it 1 plus x meter or is it 2 meter? 2 meters. तो आ गया तुम्हारा प्लस tension over here is how much? 500 into 2. Summation of this entirely is equal to 0. Can you get the value of x? Students, can you get the value of x? क्योंकि यही तो पूछा ना, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस पे ये इंसान मूव करेगा, कितना मूव करेगा, so that the rod still balance maintains equilibrium. So now solve this. So on solving it, what exactly you're getting the answer as? 2 by 4. Minus 300. Agreed. This will be how much? Minus 500. Agreed. This will be minus 500x plus 1000 is equal to 0. So this is 800 we consider. 1000 minus 800 will be how much? 200 is equal to 500x. तो x कितना होगा? 2 by 5, यानी 0.4 meter. Agreed. So x is equal to how much?
40 centimeters. 0.4. Yes, 0.4 meter or 40 centimeter. That means the person was exactly midway 1 meter. He will walk another 40 centimeter. ध्यान से सुनना, जब तक वो 40 सेंटीमीटर तक तब तक चलेगा, तब तक रॉड हॉरिजॉन्टल ही रहेगा. अगर वो 40 सेंटीमीटर से ऊपर की तरफ चला गया, then it becomes unequilibrium in that case. The rope will not be able to hold it in that case. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, Yes. sir. The rest of the students of TP Bhatia. Oh, Yes, is it sir. so? I have to ask to more precisely TP Bhatia. Shreyas, what about you? Yes, sir. Yes, Shona, what about you? Yana? Yes, sir. Okay, fine. Can I erase this? इसको erase कर दूं मैं अभी? No, sir. तो सर ने पूछा था तुम्हें, हिमाचल ने पूछा था कि कहाँ तक किया रोटेशनल वगैरह? हाँ सर, पर उन्होंने बोला चलेगा जो भी हो, वापस स्टार्ट करने वाले. Okay, fine. सर बिकॉज जेई स्टूडेंट्स का नहीं हुआ था ना बिल्कुल भी स्टार्ट. Oh, fine. It was a अच्छा mixed students होंगे JEE और NEET होंगे. हाँ सर. That is why. But this is purely for NEET students, ना? ये batch पूरा NEET के लिए है ना? Yes, यस सर. Okay. सर अभी आप ऑफलाइन कब आ रहे हो, क्या स्टार्ट कर रहे हो? No, I don't know about it. We get a weekly schedule na, in that case, and I wasn't over here for almost 8 days. I was out of Mumbai. That is the reason. So we get a weekly schedule in that case. So maybe I'll let sir will let me know about it. ओके सर. Well, Anu ma'am was saying that you will have it in the next week. We will have your lecture offline. Who's mine? Yes, Okay. Fine. most probably. Because now it's for 12th का चल रहा है, 12th का उनका exams है, boards भी है, तो I'm been throwing at all the centers, Andheri, Puruvali, Kadavali, everywhere I'm going over there. 12th के साथ में पूरा ये week पूरा मुझे 12th के साथ में ही दिया उन्होंने, because they have physics coming forward and they have 6 days of break for physics and they don't have break for maths and chemistry. So that's what I'm taking it sessions right now. The entire week I was with the boards. Hardly तुम्हारा एक लिया है lecture. Today I'm taking one lecture in purple batch का lecture. The rest I'm completely for 12th going into it. Because they have the upcoming exams आ रहे हैं. Coming exams शुरू हो रहे हैं ना, उनके 4th से शुरू हो रहे हैं. सर पर्पल हाउस में पीयू एक हम लोग को क्लास में आके बोल रही थी आप बहुत गुस्सा हो गए तो उनके लेक्चर. Yeah, because no reply, no response. That's why. ओके. Erase कर दूँ अभी मैं इसको? yes, sir. Yes, sir. Students try to get these kind. अभी देखो मैंने ये लिया है. A पे मैंने turning point रखा है. Students, one can go for B also. तो अगर B ले लूंगा, students अगर यही चीज मैं change कर दूं तो होगा क्या? What exactly होगा? How exactly? तो तुम्हारा डायग्राम ऐसा होगा, ये B है, तुम्हारा नाइफ एज यहाँ पे है. तो students मुझे बताओ, ये फोर्स की वजह से कहने से कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वेट ऑफ द मैन के हिसाब से कहाँ पे जाएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clock. एंटी क्लॉकवाइज. एग्रीड. और ये प्लैंक की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आया ना? Yes, sir. यस सर. ये दोनों तुम्हें पॉजिटिव, तो ये कौन सा होगा? नेगेटिव में मिलेगा. ये क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन फिर भी समेशन शुड बी इक्वल टू 0. एग्रीड. यस सर. दोनों केस में you will get the answer. So when such kind of questions come, please do not panic. Read the question carefully, think properly, and go about with it. ये ध्यान में रखना, जब भी static equilibrium, rotational static equilibrium जो maintain करते हो, तो algebraic sum of total moment of force about the turning point. Please, this is your turning point, pivoted end, या the fulcrum is always equal to 0, and the system is in equilibrium.
So, but if we take B as the turning point, we'll get our answer negative. Yeah, it doesn't matter. That shows that the entire motion is in what? That is the body is moving in what direction? Along negative axis we consider. तुम यहाँ पे ले सकते हो, वहाँ पे भी ले सकते हो. It can go in that direction also. तुम वहाँ पे ले लो फिर distance x. Are you getting it? Yes, sir. That only shows that where exactly the person is moving. Okay, away from O, क्योंकि O को तुमने 0 सेंटीमीटर लिया ना. हेलो, O को अगर तुम 0 सेंटीमीटर लेते हो या 0 मीटर और B को तुम 2 मीटर लेते हो, तो you are tending to move towards greater. अगर तुमने वहां पे ले लिया तो it will be going in left hand side, so that's going to the right or to the left. It's like that. Understood, sir. Okay, now students, the next question. Let's see who can get the answer for this. Students, it's given to you that a ladder of negligible mass having a crossbar. Listen carefully, students. There is a ladder over here. This is a ladder of negligible mass. Mass of the ladder is negligible, students. Okay, इसका mass negligible. Having a crossbar. A crossbar है, students, over here. A kind of a hinge. Okay, which is holding it. And if you see these kind of bars, you can fold them, and then when you open it, it will get horizontal. That means the crossbar is under constant tension. If you try to feel the crossbar, are you getting it? It's very holding tightly in that case. जब भी तुम उसको fold करोगे तो वो relax हो जाता है hinge के यहाँ पे, लेकिन जैसे तो open करोगे, it becomes very straight and very rigidly placed in that case. So a ladder of negligible mass having a crossbar is resting on a frictionless horizontal surface. Students, अभी मैं यहाँ पे friction को नहीं consider कर रहा हूँ. This is a frictionless horizontal surface, students, okay? Or horizontal floor with an angle between its legs to be 60 degrees. So the angle between its legs is considered to be as how much? The angle between its legs, I'm taking it to be as how much? 60 degrees, students. Okay. Each leg is 1 meter long. The length of the leg is 1 meter long, students. This is the length of the leg. Okay, each is of 1 meter long. Both these particular legs are of equal length, 1 meter long, students. Calculate the force experienced by the crossbar. So I need to find out force experienced by crossbar. That's the question asked. Force experienced by the crossbar when a person of mass 50 kilograms is standing on the ladder. Friends, अगर मैंने किसी इंसान को खड़ा कर दिया यहाँ पे जो 50 किलोग्राम का है, agree to उसके weight तो act होगा. What exactly the mass of the person is? 50 kilograms. So I want to know what exactly the force experienced by the crossbar when a man of mass 50 kilograms is standing on the ladder. Take gravitational acceleration g to be as how much? 10 meters second square. Let me take this as point A, this is point B, this is point C, I take this as point D, and this is point E. And this is point O. Students, hope the question is clear. Once again, I repeat, a ladder of negligible mass. Yani mass of the ladder लेने की जरूरत नहीं है throughout the question. Okay, a ladder of negligible mass having a crossbar
is resting on a frictionless horizontal floor with an angle between the legs is 60 degrees, students. Each leg is 1 meter long. Each leg is 1 meter long, students. Okay, and calculate the force experienced by the crossbar. Force experienced by the crossbar, students. When a person of mass 50 kilogram is standing on the ladder. Students, when the person of 50 kilogram is standing on the ladder, don't you think so? Due to the weight of that person, the rod will be more rigidly held. That means you will find out there is some force acting on the rod. You can consider a kind of a tension has been created in this particular. This becomes a direction of tension in each case. I get. Students, क्या ये question clear हुआ? हाँ students, मुझे ये t की value चाहिए. Students, is the question clear? Yes, sir. The rest of you all. Yes, sir. Students, the problem is made easy by not taking friction. Fiction. फ्रिक्शन अगर मैं ले रहा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स भी ऐड हो जाता है. Which I'll be taking it later on. Is anyone? Students, have you understood the question? Question समझ में आया तुम्हें? Students, please once Yes, again. sir. Yes, Question sir. Oh, okay, anybody can explain what exactly the question is speaking about? Students, question क्या बात पूछ रहा है? What exactly the question is speaking about? ये देखो, ये लैडर को तुमने ओपन किया. स्टूडेंट्स ध्यान से सुना, तुमने लैडर को ओपन किया और ये जब भी तुम रॉड को देखोगे ना तो रॉड थोड़ा सा हिलेगा भी. इफ यू ट्राई टू फील इट, अगर मैं यहाँ पे हिंज दे देता हूँ ना स्टूडेंट्स, इट्स लाइक दैट. इट इज फोल्डेड इन दिस मैनर. जैसे तुम इसको खोलोगे ना तो ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा स्टूडेंट्स. लेकिन फिर भी तुम अगर फील करोगे तो ये थोड़ा सा लूज है. अभी ध्यान से सुनना. सपोज इफ आई मेक अ पर्सन ऑफ और अ बॉय ऑफ मास 20 किलोग्राम climbing up and he stands over here. Still the stand is maintaining equilibrium. Yani the ends are not slipping. Student, surface frictionless hai. Hello, friction supports the body to be at rest. ये frictionless है, यानी ये leg slide हो सकते हैं लेकिन हो नहीं रहे हैं क्योंकि हमने जो weight यहाँ पे डाला है वो कम है. कुछ समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मैं 20 किलोग्राम लेके जाता हूँ, 30 लेके गया, 40 लेके गया, एक मैक्सिमम 50 तक मैं लेके गया, फिर भी मेरा ये स्लिप नहीं हो रहा है. अगर बाई चांस मैं 50.5 लेके जाता तो क्या हो जाता? यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट मैनर. सर, आपने ये जो मैन को खड़ा कर दिया जो 50 किलोग्राम्स है, तो वो तो मैक्सिमम डांस सुना, दैट इज द मैक्सिमम weight the ladder can bear.
If I would have gone for a weight greater than that, एक मोटे इंसान को अगर मैंने खड़ा कर दिया होता तो क्या वो लैडर रहता वैसे? हाँ स्टूडेंट्स, या स्लिप होता? हाँ स्टूडेंट्स, स्लिप होता कि नहीं होता? The two ends would have slipped. Yes, sir. तभी जाके हम फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं. अगर मैंने फ्रिक्शन कंसीडर किया तो आई कैन गो फॉर मोर वेट. I can take a person of more mass and the friction supports it. But now there is no friction, so that's a maximum weight. Agreed? So that is the approach. Secondly, अगर by chance ये maintain कर रहा, अगर ये turning effect के हिसाब से होगा, तो ध्यान से सुनना, hint में दे रहा, turning effect के अगर देखना है तो तुम देखो ना, इसको निकाल लो, ये निकाल लो. मुझे बताओ, the turning effect is taking place about what? ये पूरा system turn हो जाएगा. And the turning effect is taking place about what? About this point. यानी ये leg इस तरफ जाएगा और ये rod इस तरफ आएगा. ये part इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाएगा. ये क्या है? ये कौन सा force है? Component of tension. ये देखो, reading tension है, उसका component आ गया. ये कौन सा है? Normal reaction force का होगा. ये देखो, दो forces देखो, two forces. ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? I get it. This is going in what direction we consider? So this is going in clockwise direction. About this point. ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? Anti-clockwise direction. About the same point. यानी तुम्हारा टर्निंग पॉइंट ये है. तो तुम्हें करना क्या स्टूडेंट्स? ये दोनों फोर्सेस को, टॉर्क्स को बैलेंस करना है. जब ये दोनों टॉर्क्स बैलेंस हो जाएंगे, you can find out the tension acting on the horizontal. Are you getting this part clear? What about the second? If I'm getting it over here, the same tension is acting over there also, no? The tension in both will be the same. You have to go for any one of the rods. The direction of tension, both दोनों के लिए same ही होगा tension. Question क्या पूछा है? Force experienced by the crossbar. क्या ये clear हुआ? Now let us go for the forces. Everybody is careful, students. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब ये मैन खड़ा होता है तो मुझे बताओ पॉइंट ए और पॉइंट ई पे वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? स्टूडेंट्स, where's the direction of normal reaction force? तो बोला सर normal reaction force is always when the ladder is in contact with the surface. तो ये हुआ normal reaction force. Agreed? ये यहाँ पे भी normal reaction force है. Agreed? ये कितना है? 60 degrees. This is the force acting in the crossbar. I need to go for resolving this. तो मैंने एक force इस तरफ लिया. Agreed? I will go for this. I will not go for this particular force. तो ये जो है angle I need to consider. If I try to go for an angle, please draw a perpendicular from here. Agreed? ये 60 है, इसको मैं अगर perpendicular तो ये angle कितना हो जाएगा? 30 degrees हो जाएगा students. ये 90 हो जाएगा, ये 60 होगा, तो can I say this becomes 30 degree? क्या ये clear हुआ सबको? हाँ students. Is it But clear? why did we take component of tension and not complete tension? Of course, because there is I need to go for torque now. I need to create a torque turning effect, and the turning effect is because of what? Because of the forces acting over here. यानी तुम्हारा टेंशन इस डायरेक्शन में आ जाए. मुझे परपेंडिकुलर फोर्स है ना, तुम्हारा रॉड ये है, तो एक परपेंडिकुलर फोर्स ये होगा, दूसरा परपेंडिकुलर फोर्स ये होगा, और ये मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया. So this is my turning point. So one force into perpendicular distance. What is the distance over here? ये कितना distance है? So the length of the rod is 1 meter. This is another force. And what is the length over here? 0.5 meter. Two forces equal in magnitude, opposite in direction, will maintain the system to be in equilibrium. You're not getting it? Yes, sir. Now go ahead with it and solve.
तो देखो ये तुम्हारा टी है, ये 30 आया, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा सर? ये हो जाएगा टी cos 30। एन का क्या होगा स्टूडेंट्स? एन का क्या होगा? कैन यू रिजॉल्व दिस सर? ये होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये 30 हो जाएगा। इसको रिजॉल्व करते हैं, आई गेटिंग इट? तो ये हो जाएगा n cos 30, ये क्या हो जाएगा n sin 30। Now your anti-clockwise movements is equal to clockwise movements. Yes, What are sir. the clockwise movements? N sin 30 into perpendicular distance. What is the perpendicular distance? Length of the ladder is balanced by what? Component t cos 30 into perpendicular distance. And what is the perpendicular distance? Half the length of the rod. Can you find out T? Yes. Do you know the normal reaction force? Yes. Where is the weight of the person is acting? So the weight of the person is acting in the downward direction. Please pay attention. The weight of the person is acting in the downward direction. So mg is balanced downward. Which are the two forces acting upwards? The two forces acting upwards are the normal reaction forces, students. So can I say N plus N is equal to mg? The rod is in equilibrium. N plus N equal to mg. हाँ स्टूडेंट्स, दो फोर्सेस ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ जा रहा है, तो 2n is equal to mg. 2n is equal to mg, तो n क्या हो जाएगा? mg by 2. How much is mg? How much is mg? 500. 500 divided by 2. Divided by 2. So what is the normal reaction force? 250 Newton. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. प्लीज स्टूडेंट्स, तुम्हें n नहीं मालूम था, तुम n निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये 50 किलोग्राम इज द मैक्सिमम वेट द लैडर कैन बेयर. So the weight mg is acting in the downward direction. These are the two vertical forces acting upwards, and the entire system is in equilibrium. So mg is balancing two forces. So n plus n balances mg. So 2n is equal to mg. N is equal to mg by 2. How much is mg? 500. 500 divided by 2 will be how much? 250. How much is sine of 30? Half. L gets cancelled. T, what is cos of 30? Root 3 by 2. Into 1 by 2. 1 by 2, 1 by 2 gets cancelled. So now can you say what is the answer over here? 500 by root 3. Yes. So what exactly the tension we consider is? Tension will be equal to how much? 500 by root 3. That many Newton. You can rationalize the denominator and get the answer accordingly. Friends, is it clear to all of you all? Yes, Uh, sir. Yes, sir. Everyone, please try to think properly. And I don't know about it, whether you are aware about such kind of ladders. Students, ये जो normal ladders होते हैं, अगर तुम देखोगे ना तो तुम fold करके रख सकते हो स्टूडेंट्स, और बीच में hinge होता है। जैसे तुम लैडर को खोलोगे तो वो हिंज ओपन होता है और रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाता है. बट इफ देयर इज नो मैन स्टैंडिंग ऑन टू इट, प्लीज स्टूडेंट्स ट्राई टू फील द सेंट्रल पोर्शन. यू विल फाइंड आउट द सेंट्रल पोर्शन इज स्टिल इन मूविंग, इट्स इन मोशन. जैसे तुम इसको अगर ऊपर नीचे करोगे तो ये एंड होगा ना, वो आगे पीछे होते रहेंगे. यानी नाउ यू मेक अ पर्सन टू मूव ऑन टू द लैडर सो दैट इट रिमेन्स प्रॉपर. आई गेट. लेकिन एक हद तक तुम वेट सस्टेन कर सकता है ये. अगर तुमने एक वेट बियॉन्ड ले लिया तो स्किड हो जाएगा. इट विल ट्राई टू स्लाइड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. इट्स अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. So up to what extent the two ends of the ladder can bear the weight of 50 kilograms? Where is the 50 kilogram is acting? In the downward direction. Normal reaction force is always a contact force, and it's always directed vertically upwards for a body in contact with the surface. So ये n1 यहाँ पे होगा, ये n यहाँ पे होगा. So the 2n balances what? mg. So n कितना होगा? mg by 2. Each will be mg by 2. So n will be equal to 50 Newton. Now if I happen to go for it, ये n को मैंने resolve किया into two components. ये होगा तुम्हारा n cos और ये होगा n sin 30. वैसे तुम्हारा ये जो t है, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये वाला होगा, और ये पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा? t cos 30. So this is one force into perpendicular distance, और ये another force into perpendicular distance.
ये हो जाएगा तुम्हारा क्लॉकवाइज और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। गेट यानी ये फोर्स क्या कर रहा है मालूम है स्टूडेंट्स, ये फोर्स ये लैडर को इस तरफ लेकर आना चाहता है। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये फोर्स ये एंड को इस तरफ लेना चाहता है, लेकिन ये फोर्स ये एंड को इस तरफ लेना चाहता है और वो दोनों बैलेंसिंग हो जाते हैं, तभी जाके द लैडर इज एट रेस्ट and at that time the horizontal rod experiences maximum force, that is maximum tension. What is the maximum tension? 500 by root 3. So, Yeah, but yeah. so there's tension from the other side also now. So do we have to multiply it by 2? No, my dear, they're asking you is what to find out the tension in each rod in that case. Okay, they simply ask you the tension in the rod in that case. So that tension in one of the rod we can consider is, and it's uniform throughout. It's not that you have to add it in this case. Now, if I happen to go for the net force acting, then there is one force acting in this direction, and the force in being vectors. These are two forces in opposite direction. Yes, sir. So they'll rule out in that case. Therefore, the system is in equilibrium. So simply that you need to find out the tension acting in the rod. Is this clear? Yes, sir. Can I erase this, students? इसको erase कर दूं मैं अभी. Students, can I erase it? Yes, sir. Okay. So students, I'm giving you a simple diagram. Okay, I want you to answer for the forces acting over here, and I need to find out the corresponding torque about a given point. Listen carefully, और यहाँ पे हम friction को consider करते हैं. Please pay attention now. Okay, think and give an answer accordingly, students. Think as if there is a ladder, students, and the ladder is balanced on a wall. Students, ये एक vertical wall है, okay, और ये horizontal floor है. Okay, this is the floor, and this is vertical. Okay, this is a vertical wall and this is a floor. Okay, this is the base. Okay, and we say that a ladder, students, a ladder is balanced. Huh? Balance हो रहा है, students. Yani, if in case if I show it to you all, this is how the ladder is. ये ladder है, students. Okay, I'll take this as point P. I'll take this as point Q. I'll take this as point center of mass. I can consider the C. Okay, so now a ladder is placed on a wall. Okay, I want you to find out, and the length of the ladder is L. Students, the length of the ladder is L given to you. Now the question is, students, I wanted to find out torque about point C.
Students, I wanted to find out torque about point C. About point C. So once again, students, the question is, a ladder is balanced on a vertical wall. Okay, the length of the ladder is L, students. The weight we consider is weight of the ladder is mg. Okay, the weight of ladder is mg, students. Okay, weight of the ladder. I need to find a torque about point C. चाहिए. Length of the ladder is L, students. Okay, you have to consider friction accordingly. I need to find out the torque about point C, students. Okay, can you get an answer for this? The angle ladder forms with the horizontal, students, is theta, is inclined. Students, is the question clear to all of you all now? Students? Yes, sir. अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैं ये लैडर देखता हूँ और लैडर होल्ड कर रहा है, that means suppose if I make a person to, or if it's holding it, what's the reason for it to hold? There is no person walking onto it. उसका मतलब what exactly it is? सर उसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन इसको होल्ड करके रख रहा है, यानी तुम्हें फ्रिक्शन प्ले करना पड़ेगा. अगर सपोज मैं बोला कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, तो जैसे मैंने लैडर को रखा तो क्या होगा, स्लिप होना शुरू हो जाएगा. और स्लिप कहाँ पे होगा, ध्यान से सुनना, ये एंड किस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा. जब भी ये एंड स्लिप होगा स्टूडेंट्स, ये किसकी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा. तो पी किस तरफ जाएगा, नीचे आएगा. क्यू राइट की तरफ जाएगा, पी कमिंग डाउन. Think in that manner, if it undergoes a slipping action in that case, so the friction is holding it. Considering the friction and considering the other forces, students, try to find out the net torque about point C. And C is the center of mass of this particular ladder we consider, where the entire weight of the ladder is supposed to be concentrated. Hope the question is clear, students. Yes, anyone? Tamanyana, Sparsh, Khyati, Tisha, Shona, Sneha, Shreya, Soumya, Pranshu. Pranshu, you're from which batch? Pranshu, are you there? From which center you're? Students, shall I give you a hint for this?
Sir, but only hand. ओनली हिंट, ओके फाइन। तो देखो जब ये क्वेश्चन को मैंने पूछा क्या, सबसे पहले ध्यान रखो ये लैडर होल्ड कर रहा है, किसकी वजह से होल्ड कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से होल्ड कर रहा है। मैंने पूछा है टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, तो सबसे पहले तुम फोर्सेस को फाइंड आउट करो ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को। तो जब भी डायग्राम ऐसा दिया है तो तुम व्हाट यू डू, यू गो फॉर अ सिंपल डायग्राम, ड्रॉ वर्टिकल वॉल, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पूरा लैडर बनाने की जरूरत नहीं है, लैडर को एक स्ट्रेट लाइन ले लो, है ना, ये उसका सेंटर सी है, यानी यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा सर, उसका वेट तो इस तरफ ही जाएगा। एग्रीड। अगर सपोज मैंने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा कि नहीं पी और क्यू की तरफ, तो मुझे बताओ पी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा और क्यू के यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा। हाँ स्टूडेंट्स, और दोनों अलग पॉइंट्स हैं, ये वर्टिकल वॉल के साथ में रेस्ट है और ये हॉरिजॉन्टल रॉड के फ्लोर के साथ में। एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज अ कांटेक्ट फोर्स, है ना, तो इसका डायरेक्शन कहाँ तरफ होगा स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक सो, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ जाएगा। Yes, sir. आया ना। हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. please try to think. I'm speaking about laws of motion, I'm not speaking about rotational motion students। ये सब कुछ laws of motion में पढ़ा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन। स्टूडेंट्स अगर सपोज मैंने इंक्लाइन प्लेन दिया है और मैंने बोला है एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ पे है। तो जब तुम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में समझते हो तो शायद सर ने ऐसे बताया होगा, एक डायग्राम ऐसे दिया होगा, दूसरा डायग्राम ऐसे दिया होगा, तीसरा डायग्राम ऐसे दिया होगा। स्टूडेंट्स मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हर एक में कहाँ कहाँ पे होगा। तो मुझे सर ये ब्लॉक Perpendicular to the surface in contact. परपेंडिकुलर हो जाए, ये होगा, यहाँ पे इंक्लाइन है तो ऐसा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, Yes, ये sir. वर्टिकल वॉल पे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। सो ये तीन केसेस आ गए, बस वो ही है नॉर्मल, है ना, कांटेक्ट में। लेकिन अभी देखो ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों सेम होगा अलग होगा, अलग होगा, ये पॉइंट्स अलग है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, इसके पहला वाला जो क्वेश्चन किया था ना, वहां पे मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लैडर को दिया था बेस पे, ये दोनों सेम पॉइंट्स है, तभी करके मैंने यहाँ पे एन और एन लिया था स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे N1 N2 नहीं लिया था, क्योंकि दोनों फ्लोर के साथ में कांटेक्ट, यहाँ पे मैंने N1 N2 नहीं लिया है। इसको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज Yes. दोस टू पॉइंट्स वर इन कांटेक्ट विद द बेस। यहाँ पे दोनों का मैं NN नहीं ले सकता, ये N1 होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, अरे सर ये N2 होगा। N2. यानी ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट P, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट Q। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, mg वेट पता चल गया, वेट कहाँ पे है, यस। और कौन सा फोर्स होगा सर, आपने बोला कि ये जो रॉड रह रहा है यानी स्लाइड नहीं हो रहा है, अगर बाय चांस स्लाइड होता तो ये रॉड ऐसे जाता तो ये नीचे की तरफ आता, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ जाता, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ जाता। अगर इंस्टेड ऑफ P स्टूडेंट्स मैं इसको 0.1 ले लेता हूँ टू मेक इट मोर इजियर, और ये 0.2 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये N2 होगा, ये N1 होगा, ये फ्रिक्शन F1 होगा। देखो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखो किस तरफ जा रहा है, ये वर्टिकल वॉल है स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल वॉल है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन विल बी अलोंग द सरफेस अपवर्ड्स, है ना। ये जब इस तरफ स्लाइड होगा तो ये फ्रिक्शन इस तरफ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? ये एंगल क्या है, थीटा है। गॉट इट, गॉट इट। Yes. Yes, sir. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, यानी तुम्हारा सी टर्निंग पॉइंट है, सी टर्निंग पॉइंट है। थोड़ा सा इमेजिन करो, ये मैंने स्लांट दिया है स्टूडेंट्स। अगर ये सोचो कि ऐसा कोई बीम हॉरिजॉन्टल होता, अब ये हिंट यही है, हॉरिजॉन्टल है, पॉइंट सी है, आई गेट इट। कौन सा फोर्स कहाँ पे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, दूसरा फोर्स कहाँ पे जा रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल है इसलिए। अब वी आर टेकिंग एट एन एंगल थीटा, तो कहाँ is any torque created due to this forces? And what is torque? What is torque? One force into perpendicular distance. स्टूडेंट्स टॉर्क का मतलब एक फोर्स होना चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आता है तो वो टॉर्क बनता है। अभी देखो सपोज मैंने अगर यहाँ पे फोर्स लिया है और ये मेरा टर्निंग पॉइंट, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं सर, ये तो अलोंग द स्ट्रेट पाथ है ना, तो ये टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ये टॉर्क क्रिएट करेगा क्योंकि वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन ये रॉड हॉरिजॉन्टल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ हिंट है कि ये इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा दिया,
So now you have to find out torque. और जैसे तुम forces को देखोगे ना, उसका arrow head को देखो, ये arrow head ladder को किस तरफ move कर रहा है? ये arrow head ladder को किस तरफ move कर रहा है? About this point C. Is it clockwise, anti-clockwise? वो तुम्हें detect करना है. बस हो गया तुम्हारा आंसर. Is the hint clear, students? Students, is the hint clear? Yes, sir. I'll try to crack it, students. Chalo. Yes, anybody? So 2 minutes. Okay. बहुत शांति से सोचना students. It's very easy. Torque is product of one force and perpendicular distance from the axis of rotation. Wherever you see a force and a perpendicular distance from the axis, it will create a torque. Direction of torque will be determined by the arrowhead of the force. If it's clockwise, that will be negative. If it is anti-clockwise, it will be positive. So the question asked is torque about point C. The length of the ladder is L. Point C is the center of mass, and for a ladder, the center of mass is always midway. Is anybody? Okay, Khyati, she got it N1 at point Q. N1 or N2? This is I've taken as point 2 at point Q. Sir, 2 and 1 tan theta. Okay.
Okay, students, shall I put forward now? Students, Yes, sir. I mean answers now. Please pay attention. Students, to get torque, I know the forces. I know the line of action of forces. I know the line of action of forces. मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि perpendicular distance कहाँ से create होगा, because this is my axis of rotation and this is my point of rotation. Students, ध्यान से सुनना. मैं क्या करूँगा? Students, ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ पे एक horizontal line I'll draw it dotted. I get it. अगर ये angle theta है तो can I say this angle is also theta? Corresponding angles. Can I say ये हो जाएगा perpendicular? Agreed? Is this clear, students? Yes, sir. और इसी को अगर मैं फॉरवर्ड करूं तो ये बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर. एग्रीड? यानी दिस बिकम्स पॉइंट M and this becomes point N. I'll consider this as S and T. Let me take this as S and this is T. Now please pay attention, students. If you look at the torque, don't you think so, students? N1 is a normal reaction force acting at point 1. Is this the perpendicular distance from the axis of rotation? Can I say this is the axis? Students? Yes, sir. Everyone, ध्यान से सुना, अभी इसको मैं छोटे डायग्राम में कर रहा हूँ. ये तुम्हारा एक्सिस है. Agreed? ये तुम्हारा mg है. Agreed? This is the axis of rotation. This is point C, turning point. Do you see? ये तुम्हारा perpendicular distance आ गया तुम्हारा. I get perpendicular distance from the axis of rotation, students, we consider. So it's one force into perpendicular distance from the axis of rotation. Don't you think so? This will create a torque. है ना? तो ये क्या हो जाएगा, students? Torque due to normal reaction force N1. Students? So can I say it's one force? It's one force into perpendicular distance. What is the perpendicular distance यहाँ पे? What is the perpendicular distance? Students, ये part है. What is sine theta in this right angle triangle? What is sine theta? So sine theta is opposite upon hypotenuse. What is hypotenuse? L by 2. Students, L by 2. Agreed? Agreed. What is opposite side? Sine theta into L by 2. So can I say torque about point N1 क्या होगा? L1 into L by 2 sine theta. What is the direction? What is the direction? Sir, ये जो है about point से तो ये कौन से direction में जाएगा? Sir, ये clockwise जाएगा. क्या ये clear हुआ? Students, क्या ये clear हुआ? Torque about point N1. One force into perpendicular distance from the axis of rotation we consider. The entire system. So I have to go for the component in this case. And मैंने ये theta लिया है. What exactly sine theta? Opposite upon hypotenuse हो गया. Are you getting it? So I'm getting in terms of what? L by 2 sine theta आ गया. So ये एक torque create करेगा. लेकिन कौन से direction में जाएगा? Clockwise में जाएगा. Students, क्या ये clear हुआ? Students? Yes, sir. Everyone, I'm not only explaining, Sanjana, please, the rest of the students also. Aditi, is it clear? Parthu, is it clear? Yes, sir. Soumya, Yes, sir. Shreyash, Shona, Tisha, Yana. Yes, sir. Okay. अभी देखो दूसरा और एक फोर्स है. स्टूडेंट्स देखो फ्रिक्शन को देखो स्टूडेंट्स. अभी फ्रिक्शन को देखो स्टूडेंट्स. ये देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है ना? ये फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ये तुम्हारा axis of rotation है students. देखो ना, this is how I consider perpendicular distance from the axis of rotation we consider. So this is one force into perpendicular distance from the axis of rotation. तो ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? यानी ये पार्ट क्या होगा? ये पार्ट क्या होगा? दैट इज CS. क्या होगा सर? ये हो जाएगा cos theta. What is cos theta? Adjacent side upon hypotenuse. So what is your adjacent side? L by 2 cos theta. So now can I say students, you have got a torque. You have got a torque due to the frictional force at point 1.
So can I say this is one force into perpendicular distance L by 2 cos theta? ये भी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स? देखो ये भी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये दोनों फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है स्टूडेंट्स. So this is also in what direction? Clockwise about point C. Are these two torques clear with all of you? Sir, can you please repeat it for friction? मान लो को भैया where is a force of friction acting? क्योंकि जैसे रॉड जैसे लैडर नीचे की तरफ स्लाइड होगा, क्योंकि अगर सपोज मैंने बोला फ्रिक्शन होल्ड नहीं करेगा तो क्या होगा? ये पॉइंट नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर जाएगा. I get it. Now I need to go for torque. What is torque? One force into perpendicular distance. One force into perpendicular Yes. distance. So this is one force and its component. I'm taking the component of the distance. Actually, my ladder is over here, but I'm taking the component. यानी मैंने cos theta के हिसाब से लिया. तो one force into perpendicular distance. What is the perpendicular distance? L by 2 cos theta. This becomes a torque, and that torque will be acting in what direction? Clockwise direction. Clear here now? The component should be L by 2 sin theta, right? My dear, this is theta ना. Adjacent side is this. ये तुम्हारा line of action of force होगा ना? Hello. याना हाँ. ध्यान से देखना याना. अगर तुम F1 ऊपर की तरफ ले रहे हो और अगर तुमने L by 2 sin theta ले लिया तो ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हुआ भाई. कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ये? L by 2 sin theta तो उसी लाइन में जा रहा है ना. मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए या ना. ये वन फोर्स हुआ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ ना. तुम अलोंग नहीं ले सकते हो. तो परपेंडिकुलर यानी ये होगा एडजेसेंट. तो cos theta आएगा ना. cos theta will be adjacent upon hypotenuse. So what exactly adjacent will be? L by 2 cos theta. Agreed? Yes. So now you've got two torques in that case. जब भी मैंने यहाँ पे torque निकाल दिया, now students can you get the torque for this also? Yes. चलो अब इसका निकालो. मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. Now get an answer over here also students. ये थीटा है तो ये ऑपोजिट क्या होगा? L by 2 sin theta. ये क्या होगा? L by 2 cos theta. Can you find out the torque due to N2 and torque due to force of friction F2? Can you tell me what is the formula for torque due to N2? Torque due to N2 क्या होगा? Torque due to N2 क्या होगा? ये देखो ये वन फोर्स होगा कि नहीं होगा? और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? L by 2 cos theta. हाँ, L यानी वन फोर्स into L by 2 cos theta. What is the direction? What is the direction? Is it clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. ये anti-clockwise हुआ. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes. अब ये फ्रिक्शन की वजह से कैसे जा रहा है स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन को देखो. फ्रिक्शन इस तरफ जा रहा है. ये हुआ वन फोर्स. एग्रीड. एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसी फोर्स को कहना है एक्सटेंडेड ओवर हियर. यस. वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बट Yes. see the motion. Is it anti-clockwise or clockwise? ये फोर्स किस तरफ जा रहा है? ये देखो ये फोर्स किस तरफ लेके जा रहा है? Anti-clockwise. Anti-clockwise. हाँ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से लेके? एंटी-क्लॉकवाइज लेके जा रहा है कि क्लॉकवाइज लेके जा रहा है? Clockwise. Please look at force of friction. Look at force of friction. Is it anti-clockwise or clockwise? Sir, clockwise. Please ध्यान से सुनना. N1 clockwise, F1 clockwise, F2 clockwise, N2 anti-clockwise. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. If I have to ask for torque with respect to, so what exactly torque? Torque due to F2. So it's one force into perpendicular distance. And what exactly perpendicular distance I'll consider will be? L by 2 sin theta. Yes. And what is the direction? Clockwise. Clockwise.
Now for the system to be in equilibrium, summation of net torque about point C should be equal to 0. तो तुम क्या करोगे? ये दोनों को ऐड करोगे, आया ना? क्लॉकवाइज को ऐड करोगे, एग्रीड? ये भी क्लॉकवाइज को ऐड करो, लेकिन ये तीनों को ऐड करोगे तो इन तीनों के सामने कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। आई गेट इट? और ये कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? Are you getting it? Is this clear, students? Students, are you getting it? Any confusion, please ask me right now. Right now. Can I erase this diagram again? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ मैं? ये diagram को erase कर रहा हूँ, students. I'll just try to now put in once again how to go about with it. How's the thought process, students? Again, since it is a very simple concept. Listen carefully for the last time. Those students are still struggling. Students, ये vertical wall है, ये horizontal wall है, ये ladder था, ये point 1 है, ये point 2 है, यहाँ पे ladder का weight नीचे की तरफ act हो रहा है, तो ये mg नीचे की तरफ act हो रहा है, मुझे यहाँ पे चाहिए था torque, students यहाँ पे torque चाहिए था, turning effect चाहिए था, तो मुझे forces के हिसाब से जाना है ना, forces के हिसाब से जाना है, तो can I go for forces? ये angle तुम्हें थीटा मिला है, एग्रीड? तो ये तुम कर सकते हो, एक तो तुम ये वाला फोर्स ले सकते हो और तुम ये वाला फोर्स ले सकते हो, लेकिन सिंस इट्स प्लेस्ड इंक्लाइंड आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर दीस टू फोर्सेस। मैं सबसे पहले फोर्सेस कौन से निकालूंगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये मेरा N2 होगा, ये मेरा N1 होगा, स्टूडेंट्स, एग्रीड? देन अगर ये पॉइंट 1 स्लाइड होता है नीचे की तरफ, क्योंकि ये पीछे जाएगा नीचे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर जाएगा, तो ये F1 इस तरफ जा रहा है, ये F2 इस तरफ आएगा। नाउ ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, टॉर्क का मतलब वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर तुम ये फोर्स को देखते हो तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे होगा? स्टूडेंट्स, एक्सिस का मतलब पॉइंट सी का ये भी एक एक्सिस है, एग्रीड? आई कैन कंसीडर, आई कैन टेक दिस आल्सो एज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई कैन टेक दिस आल्सो एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो ऑल दीस आर एक्सिस अबाउट पॉइंट सी। तो वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस सामने वाला क्या होगा? L/2 sin थीटा। ये क्या हो जाएगा? L/2 cos थीटा। यानी तुम N1 के हिसाब से देखोगे तो N1 ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये एक टॉर्क क्रिएट करेगा। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग इट? Perpendicular distance about we consider. Likewise, if I happen to go for force of friction, तो force of friction ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका perpendicular distance ये है from the axis of rotation will consider, and that is L/2 cos theta. ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, दोनों क्लॉकवाइज जा रहा है। ये N2 की वजह से किस तरफ जाएगा? सर ये इस तरफ जाएगा, ये है वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सामने वाला क्या होगा? दिस इज L/2 sin थीटा और ये होगा L/2 cos थीटा, तो इसके साथ में L/2 cos थीटा आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ जा रहा है, इसी को मैंने आगे ले लिया, तो ये वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो F2 इनटू L/2 sin थीटा। लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज। नहीं, क्लॉकवाइज में तीन हो गया, F2, F1, N1 और N2 एंटी क्लॉकवाइज। सो इफेक्टिव क्या होगा? क्लॉकवाइज मोशन। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. कैन आई इरेज इट नाउ? Friends, can I erase it? Yes, sir. Sir, but how will the system be in equilibrium because there's a net clockwise movement? Pardon? No, sir, I'm asking that how will the system be in equilibrium because there is a net clockwise movement? My dear, the system will be in equilibrium when the forces are balanced.
That means if I happen to consider the person, because when you're trying to use this particular ladder, in that case, the friction is holding it. So the forces on the clockwise, यानी तुम जब इन सब तीनों को ऐड करोगे ना, वो तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज से बैलेंस होगा. The values of this will be balanced by this on either side. Now suppose if I make a person to walk onto it, still it should give me a balance. Suppose if I say a person is standing over here, तो उसका weight भी लोगे तुम, तो उसके भी तो component होंगे ना. The weight of the person also will be taken care of in that case. So those forces also will add in that case. So that entire system, yani if I say the ladder is in equilibrium, that means now I'm having 3 clockwise movements on one side and 1 anti-clockwise. That 1 anti-clockwise will be effective in comparison to the other one. So that's how we can consider the normal traction forces. N1 and N2 are the 2 normal traction forces. So ये force तुम्हारा ज़्यादा stronger होगा as compared to this because it has to balance all the 3. Yes. अगर ये N2 strong नहीं होगा, students ये N2 अगर strong नहीं हुआ तो skid होगा. Are you getting it? Is this clear? Yes, sir. The question was asked only to find out torque about point C. Can I erase it now? Yes, sir. Okay. That should one more question of this kind. Students, this is a spanner. Okay, a spanner is made to be resting by a nail. Students, एक nail रखा हुआ है और spanner को मैंने incline रखा है on a horizontal surface. Students, okay. Let us take this as point 1 again. The entire weight of the spanner is at point C. That's mg of the spanner is acting in the downward direction. And this is in contact with the floor, so that is point 2. Since I want you to find out the torque about point 1. And torque about point 1 चाहिए मुझे. over here. The spanner is in contact with a, suppose this nail is fixed. Students, ये जो nail है वो एक fixed nail है. Are getting it into the base. So it's a kind of a vertical wall. Assume करो इसको vertical wall. This is actually at an angle of 90 degree, I'll consider. And this angle is placed, the spanner is placed at an angle theta with the horizontal. Okay. I wanted to find out torque about point 1. So now how do you go about with it? So ये तुम्हारा vertical wall हुआ, ये तुम्हारा horizontal floor हुआ. The spanner is made to rest onto it. This is point 1. This is point C. This is point 2. ये तुम्हारा mg नीचे की तरफ जा रहा है. ये तुम्हारा angle theta हुआ है. Agreed. Now this is 90. I wanted to find out torque about point 1. Now to go ahead with this, exactly go identically पहले केस में सबसे पहले forces find out करो. Try to find out forces.
This is my axis of rotation. Students, क्या question clear हुआ students? Yes, sir. Anybody? Can you find out the forces students? सबसे पहले forces निकाल सकते हैं students? So normal reaction. Is a spanner resting on the floor? Yes. तो सबसे पहले अगर मैं देखूं students, so look at the forces students. यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे normal reaction force ऊपर की तरफ जाएगा N2. अगर सपोज ये होल्ड नहीं कर रहा है फ्रिक्शन, तो ये स्लाइड पीछे की तरफ होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा F2. Agreed? Yes, sir. The weight is acting in the downward direction students. Now यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यानी यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन, because it's in contact with the, so there is a normal reaction force over here also. If in case if the grip is not sufficient students, ये जो स्पैनर है और ये स्क्रू है, अगर ये प्रॉपर्ली फिक्स नहीं होगा students, ये प्रॉपर्ली फिक्स नहीं होगा तो वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, है ना? स्क्रू से नीचे की तरफ, जैसे वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ भी Frictional जाएगा. force. I get it. लेकिन मुझे चाहिए टॉर्क अबाउट 0.1. फ्रेंड्स, अगर मेरा ये टर्निंग पॉइंट है about 1 and if I apply forces at 0.1 itself only, will it create any turning effect? Friends, No, recall, sir. No, sir. मैंने टॉर्क का एक्सप्लेनेशन कहाँ से शुरू किया था? कुछ याद आ रहा है? मैंने बोला था ये हॉरिजॉन्टल रॉड है. फ्रेंड्स, ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है. अगर तुमने ध्यान से सुना होता तो मैंने बोला अगर मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो बॉडी किस तरफ जाएगा? ट्रांसलेशनल, नीचे की तरफ. फिर मैंने बोला था अगर मैंने फोर्स ऊपर की तरफ दिया एग्जैक्टली तो किस तरफ जाएगा बॉडी? ट्रांसलेशनल, ऊपर की तरफ जाएगा. कुछ याद आ रहा है टॉर्क का कंसेप्ट? फिर मैंने बोला अगर मैंने दोनों फोर्सेस इक्वल एंड मैग्नेट ऑपोजिट डायरेक्शन में दूंगा तो देयर इज नो टॉर्क इन दैट केस. यानी अगर मुझे टॉर्क चाहिए तो शुड द फोर्सेस एक्ट एट द टर्निंग पॉइंट और अदर देन द टर्निंग पॉइंट? Other than the turning point. Yes, these forces, see N1 and F1, they are acting at 0.1. So will there be any torque? Will there be any torque due to N1 and F1? So torque No, due sir. to N1 and torque due to F1 will be equal Zero. to 0.
ये क्लियर हुआ बिकॉज माई पॉइंट 1 इज टर्निंग पॉइंट, pivoted end और द fulcrum. क्या ये क्लियर हुआ? Students, now you have to find out for the other. टर्निंग पॉइंट ये है, अभी तुम फोर्सेस ढूंढो ना, क्या mg भी फोर्स है? हाँ सर mg फोर्स है, इसके हिसाब से भी तो टर्निंग इफेक्ट होगा ना। पहले केस में नहीं था, हेलो स्टूडेंट्स, पहले केस में नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि mg was acting at point c. Was that force acting at point c? Yes. तो वहां पे टर्निंग इफेक्ट होगा ही नहीं। लेकिन अभी होगा, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, सी टर्निंग पॉइंट नहीं है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी देखो तुम्हें टर्निंग पॉइंट मिलेगा, यानी ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, अभी तुम्हारा ये फोर्स है, ये है। जस्ट सिंपली फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? कहां पे तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है? तो इफ आई ट्राई टू कंस्ट्रक्ट माय डायग्राम, everybody is carefully, just simply extend your diagram ना। theta, this is also theta. Now see, one force, and ये हुआ perpendicular distance from the axis of rotation. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? One force, perpendicular distance from the axis of rotation. This will create a torque. Now students, will this mg will create a torque? What direction? Yes. What direction? Clockwise. सिर्फ तुम्हें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। What exactly the length of the spanner is? Let us say the length of the spanner is L. तो ये L/2 होगा, ये L/2 होगा। The total length of the spanner is L. Students का समझ में आ रहा है? Students, are you getting it? Yes, sir. अभी देखो, यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एक फोर्स जा रहा है N2, तो one force into perpendicular distance from the axis of rotation, है ना? तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा स्टूडेंट्स? ये जो वन फोर्स जा रहा है into perpendicular distance, ये तुम्हारा perpendicular distance होगा। If I take this as point 1, this is also the same point I'll consider. Students, shift this force parallel to itself. यानी स्टूडेंट्स मेरा ये point 1 है, स्टूडेंट्स ये मेरी horizontal line होगी। ध्यान से सुनना, ये point C है, ये mg यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये n2 इस तरफ एक्ट हो रहा है। ये क्या होगा? L/2 होगा। इसका कंपोनेंट के हिसाब से तुम लोगे, है ना, थीटा के हिसाब से लोगे कंपोनेंट। तो इसका क्या होगा? L/2 cos थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? L cos थीटा होगा, है ना? ये L cos थीटा होगा कि नहीं होगा? ये पूरा लेंथ Yes. n2 के हिसाब से तो ये पूरा L cos थीटा होगा स्टूडेंट्स। हाँ है ना? लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज। एंड ये क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है। ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट्स ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्लीज, L cos theta, ये L है, L cos theta. Students, are you getting? Are Yes. you getting it? Now, can you go for the friction? Is there friction also acting? Which friction? तो इसकी वजह तो 0 है, F2 है। F2. F2 की वजह से कैसे होगा स्टूडेंट्स? देखो, ये तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स है। One force into perpendicular distance from the axis of rotation, है ना? तो ये perpendicular distance क्या है? What is this perpendicular distance, students? This is one force, F2, perpendicular distance. What is this distance? Is it cos or sine? This is theta. Sine. Sine theta. Will it be L/2 sine theta या L sine theta? L/2. How come L/2 my dear? ये पूरा लेंथ हो गया ना? L. ये पूरा लेंथ हो गया ना? ये पूरा लेंथ होगा ना? ये थीटा ये है, तो L sine theta होगा ना ये।
हाँ स्टूडेंट्स, ये देखो ना, ये और ये सामने वाला है। जब भी ये पूरा L cos थीटा होगा तो ये L sin थीटा होगा, तो ये भी L sin थीटा होगा। आया ना? Yes, sir. लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो F2 की वजह से स्टूडेंट्स ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। Are you getting it स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है टर्निंग इफेक्ट का कंसेप्ट? In order to have a turning effect, you need to see to it that we go for components of the length of that particular rigid body which is rotating about a given point, and we try to take it in its direction perpendicular to the axis of rotation. So the component which is perpendicular to the axis of rotation, it can be L by 2 cos theta, L by 2 sin theta, L sin theta, L cos theta. And that's how we can go for the torques. So the corresponding no torque due to F1, no torque due to N1 because it is at point 1. If I happen to go with respect to mg, the torque due to hg will be clockwise moments. The torque due to n2 will be anti-clockwise moments. The torque due to f2 will be again clockwise moments. Students, क्या ये clear हुआ सबको? Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? So 1 minute. Done, sir. Okay. Can I erase it now? Yes, sir. The students do keep in mind, torque is simply moment of force, and moment of force is a vector quantity. Unit is Newton meter, या kilogram force meter, या gram force centimeter. Students, torque in anti-clockwise is always positive. Torque in clockwise is always negative. Whenever a body is in static rotational equilibrium, the algebraic sum of total moment of force about that point is always equal to 0, and that gives you a condition for equilibrium. It can be either static or it can be rotational equilibrium. The body will go with constant angular speed, students. I gave you the example of rotation of the earth about its own axis. Total moment of force is also called as couple. Two forces equal in magnitude, opposite in direction, as if I told you about steering wheel of a car. Are you getting it? And the entire Yes. system is to rotate about its own axis. So that is called as couple. Whenever you do problems based on couple, students, up till now, there are no such questions asked for couple. They're asking only about moment of force. So moment of force is force into momentum. The answer is, students, force into momentum, and momentum is actually the turning arm, point of rotation to the force applied. But when you go for couple, couple is nothing but two forces equal in magnitude, opposite in direction, and they are acting at two ends other than the center of mass. तो ये कौन सा arm हो जाएगा? This is called as couple arm. The students do take care when you're speaking about couple, you have to go for couple arm. When you speak about moment of force, that is only torque, then it will be momentum. Couple arm is a distance between two forces. And momentum is a distance between point of rotation and force applied. ये ध्यान में रखना. Okay. That's Yes, also in the next lecture, I'll be picking up with respect to moment of inertia, students. Okay, and we'll be going further with your mathematical depictions. Okay, students. Okay. Sure. Bye. Take care. Thank you, sir. Bye, sir. Most welcome. Bye.